All right, so in the last lecture, what we saw was we learned Newton's law of gravitation, जिसको हमने universal law of gravitation भी बोला था. So it was very easy. It states that every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between two masses. राइट. तो हमने अब तक स्केलर फॉर्म के बारे में बात की थी. वी हैव येट टू talk about vector form of forces. So let's see what is the vector form of force. So today we will be going through vector form. तो बहुत easy है. For let us say हमारे पास दो masses है. Let me just draw some coordinate system. So this is some three-dimensional coordinate system, Cartesian x, y, z. एंड इस एक्स वाई जेड में दो मासेस है. एक है मास m1, एक है मास m2. एंड मास m1, लेट मी फर्स्ट गिव इट सम नेम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड. और मास m1 जो है, दैट मास m1 इज बेसिकली उसका पोजीशन वेक्टर है. आपको पता है पोजीशन वेक्टर कभी भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है. उसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार और m2 का पोजीशन वेक्टर है r2 बार. Okay, so the position vector of m1 is r1 bar with respect to origin and m2 is r2 bar with respect to origin. पोजीशन वेक्टर है तो मैं इसको एरो हेड से डिनोट करूंगा. एरो हेड दिखाना जरूरी हो जाता है, राइट. देन दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 रिलेटेड टू m2. इजी है ये. ओके, so this particular vector is called as r21 bar. Okay, right. So displacement from a to b is position vector of b bar minus a bar. आपको पता होना चाहिए, which we have already seen earlier. अगर मैं इसको a बोलता हूँ, इसको मैं b बोलता हूँ, तो ab bar is b bar minus a bar, मतलब r2 बार माइनस r1 बार, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ r21 बार से. तो इसलिए मैंने a से b जो वेक्टर है उसको r21 से डिनोट किया है. दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. इंपॉर्टेंट ये है, ये जो दो मासेस है, ओके, सो वी हैव टू मासेस, दिस m1 एंड m2. वी वांट टू सी इन वेक्टर फॉर्म व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 on mass m2 due to m1. तो force on mass 2 due to 1 is g, m1 m2 by distance between them square. तो मैं पहले ही मान लूंगा कि r is mod of r12 bar is mod of r21 bar. Okay, r21 bar is a vector directed from m1 to m2 and r12 bar is a vector directed from m2 to m1. उल्टा है वो, राइट. तो हम फोर्स निकाल रहे हैं 2 पे ड्यू टू 1. तो मास m1 जो है वो फोर्स लगा रहा है 2 पे, मतलब वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट. अट्रैक्ट करेगा मतलब यहाँ पे r12 बार आना चाहिए, r12 कैप आना चाहिए. अच्छे से समझ लो, आइडिया बहुत सिंपल है. आइडिया इज दिस, force on 2 due to 1 is in the direction of 1. फोर्स ऑन 2, क्योंकि फोर्स मास m2 पे लग रहा है. कौन लगा रहा है? m1 लगा रहा है. तो m1 अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? 2 से 1, है ना. इफ आई एम पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, सो आई एम द वन हु इज पुटिंग फोर्स, और उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रहा है, तो आई एम पुलिंग इट. तो ऑब्जेक्ट से मेरी तरफ फोर्स कौन लगा रहा है? m1. किस पे लगा रहा है? m2 पे. मतलब m1 जो है m2 को अपनी तरफ खींच रहा है. तो डायरेक्शन क्या होगा? 2 to 1, है ना. तो r12 कैप लिख सकते हो इसको आप
इन शॉर्ट, है ना, R12 कैप लिख सकते हो। मतलब R12 कैप क्या है, माइनस ऑफ R21 कैप। तो थोड़ा सा जंबलिंग होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन साथ में करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप बोलते हो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज K Q2 Q1 by R square R21 कैप, ऐसा लिखते हो आप, सिंपल। यहाँ पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज G M2 M1 upon R square R21 cap, but with a negative sign. That is the only difference, with a negative sign, right? तो ये नेगेटिव साइन ध्यान रखना, because mass m1 is exerting force on m2 and mass m1 is pulling m2 towards itself, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, करेक्ट। सिमिलरली सिमिलरली ये तो आ गया आपका माइनस R21 कैप। Similarly, force on 1 due to 2 is G M1 M2 by R square negative of R12 cap. मतलब force on 1 due to 2 is minus of force on 2 due to 1. तो अगर M1 M2 को अपनी तरफ खींच रहा है तो M2 भी M1 को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। सो एक्शन रिएक्शन है ये बेसिकली, राइट, गुड। तो दिस इज सिंपल, ये पता होना चाहिए आपको। We will write it down also. What else you should know is what happens if I have multiple charge masses. So let's say if I have mass m1 over here, there is some mass m2 which is here, there is some mass m3 which is over here, and mass m4 let us say which is here. हमको ये देखना है what is the force on mass m1 due to all the remaining masses. So force on m1 due to 2, force on 1 due to 3, force on 1 due to 4 and so on so forth देखना है। डायरेक्शन याद रखना हमेशा, फोर्स ऑन 1 कौन लगा रहा है, 2, तो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स 2, राइट। ओके, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, force on 1 due to 3 is this, and force on 1 due to 4 is this. So according to principle of superposition, total force on mass m1 is force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4, और अगर ज्यादा masses होंगे तो so on so forth. So total force on 1 is equal to force on 1 due to 2 क्या है, G M1 M2 by R12 square, where 1 2 is distance between 1 and 2, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये आता है R21 कैप, है ना, प्लस 21 कैप ही आता है क्योंकि इसको मैं माइनस R12 कैप लिख सकता हूं। तो मैं माइनस R12 कैप क्या है, बट माइनस R12 कैप इज नथिंग बट R21 कैप, तो मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इट इज सिंपल, तो यू कैन जस्ट फॉलो जनरल स्टेप्स, R21 कैप। Similarly, force on 1 due to 3 is G M1 M3 by R13 square, R31 cap, and so on, है ना। 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, so on so forth, right? So it is simple. It's very simple. So this is total force acting on mass m1 due to all other masses. So इसको बोलते हैं principle of superposition. तो detail we will write down later. इसका डिटेल लिखेंगे हम लोग। For the time being, we have to just note down what we learned so far. तो हमने start किया by taking into account what is the direction of force between mass m1 m2. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था, मैंने वापस बताया है आज। So let's see vector form of gravitational force.
Just a minute. Right. Let's see vector form of gravitational force. Okay. So we will write down what is important, and it's pretty simple thing. So I'll just write down with the help of pen because there are equations involved. So figure shows two-point masses m1 and m2, two-point masses m1 and m2 with position vectors r1 bar and r2 bar respectively. Okay. So what you should know, what is the position vector of m1 with respect to m2 or m2 with respect to m1. So the position vector of mass m2 with respect to m1 is given by, it is simple, so you can just write it down like r21 bar. So position of 2 with respect to 1, तो डिनोट ऐसा करते हैं हम लोग, r21 bar, position of 2 with respect to 1, that is r2 bar minus r1 bar. Similarly, the position vector of m1 with respect to m2 is given by r12 bar, that is r1 bar minus r2 bar. Okay, so it is again a simple thing. Then what we can say about forces? Therefore, the force on m2 due to m1 is given by force on 2 due to 1 is equal to g m1 m2, yeah, m2 m1 by r square minus r21 cap. Force on 2 due to 1, force on 2 due to 1, so this is equal to g m1 m2 by r square r12 cap, since r12 cap is equal to negative of r21 cap. Okay, right? So force on 2 due to 1 is from 2 to 1. Correct? So this is how you write. Direction is just from mass m2 to m1 because m1 is attracting it. Okay, right. Similarly, what you can write down is, similarly, force on m1 due to m2 is given by
F12 bar is equal to G M1 M2 by R square minus R12 cap, which is equal to, let me just pull this from here and put it on new page. Okay, so okay, so this is equal to G M1 M2 by R square R21 cap, right? So let me call this equation number 1 and this is equation number 2. Therefore, from 1 and 2, हमको क्या मिला? F12 bar is negative of F21 bar. So the force is attractive. M1 is pulling M2 towards itself and M2 is pulling M1 towards itself. So there's attractive force between these two, right? अब ये जो है ये सिर्फ 2 पॉइंट मासेस के लिए हमने लिया है. We want to see if there are more than 2 point masses, what happens? तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ forces. Just a minute. So we'll see what is principle of superposition of forces. Principle of superposition of forces. Okay. Right. So the idea is again very simple here. जैसे मैंने आपको बताया that if we have more than 2 masses, so for a collection of point masses, the force on any one of them is the vector sum of the gravitational forces exerted by all the other point masses. So for a collection of point masses, the force on any one of them is the vector sum of the gravitational forces exerted by all the other point masses. Therefore, from figure, the total force on mass m1, the total force on mass m1 is given by, so as I told you, force on mass m1 is force on mass 1 due to 2 plus force on mass 1 due to 3 प्लस फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 4, क्योंकि फिलहाल हमने सिर्फ 4 ही लिए हैं, इसलिए फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 3, 1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन, राइट? ओके, फॉर n point masses, similarly
for n point masses, total force on M1 is F1 bar equal to F12 plus F13 so on plus F1n bar. मतलब मैं इसको लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकता हूं दैट टोटल फोर्स ऑन एनी, क्योंकि हम तो सिर्फ M1 की बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल फोर्स हम M2 पे, M3 पे, M4 पे, M5 पे किसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो in general what we can write is, in general, force on ith mass Fi bar is summation Fij, j runs from 1 to n and I should not be equal to j, क्योंकि कहीं पे भी आपने देखा क्या F11, F22, F33 ऐसा नहीं देखा, इसलिए हमने लिखा है that Fi force on any, for example force on 1 है ना, तो force on 1 आएगा आपके पास F21 bar, force on 1, sorry, if I put I equal to 1, if I put I equal to 1 है ना, पर I equal to 1 तो लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि J की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और I और J इक्वल नहीं है, मतलब I की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी आपकी 2 से. तो इट इज सिंपल, इफ यू पुट I equal to 2, force on 2 will be force on 2 due to 1 plus force on 2 due to 3 plus force on 2 due to 4. 1 भी लिखोगे तो ये आएगा F1 बार, force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 and so on. तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में हमने लिख लिया, and it is a pretty simple thing on how you can write all this in Einstein summation convention. So this is principle of superposition. Just a minute. So this is what principle of superposition of forces tells you. यही चीज हमने the same form we saw in electrostatics, force on charge 1 due to all other charges. तो again सिर्फ directions matter करता है, क्योंकि electrostatics में force can either be attractive or repulsive. Here the force is only attractive, right? That is why I'm telling you again and again that you have to learn electrostatics and gravitation hand in hand. Okay, good. अब we want to define or we want to derive equation for acceleration due to gravity. So हम ये g की वैल्यू बहुत बार सुनते आए हैं, 9.8 9.8. तो ये 9.8 वैल्यू आई कैसे और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, we'll see that now. So we'll see what is acceleration due to gravity and how do we define it and how do we ultimately get that particular value of 9.8. So acceleration due to gravity. Okay, बहुत easy इसका derivation है. As we have seen from Newton's law of gravitation, जिसको universal law of gravitation भी बोलते हो आप, what we have seen is that if we have two masses, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, और एक अर्थ है, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून या फिर ऑब्जेक्ट बाय आर स्क्वायर. ये हमने ऑलरेडी देखा, वी हैव डिराइव्ड दिस आल्सो, करेक्ट. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है. मतलब दिस फोर्स इज बेसिकली बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अदर ऑब्जेक्ट मे बी मून, it may be something else. Okay,
सो दिस इज सेंट्रल फोर्स। अभी ये सेंट्रल फोर्स लेने का रीजन क्या था? वी नो दैट अर्थ इज एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, यस हमको पता है, लेकिन जब आप फोर्स की बात करते हो तो फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से फोर्स मेजर हो सकता है ना, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम लोग हाउ हाउ डू वी मेजर फोर्सेस, क्योंकि अर्थ ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और मून या दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वी कैन अज्यूम बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, we can assume that total mass of earth is concentrated at one point, that is center of earth, assuming earth is a sphere. In reality earth is not a perfect sphere, earth का shape थोड़ा सा non spherical है, but it is assumed to be spherical, so ellipsoidal थोड़ा सा अंडाकार थोड़ा, right? So we can assume that total mass of the earth is at one point, then that is at its center, which is center of mass, assuming the earth to be sphere. Similarly जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका भी सेंटर ऑफ मास होगा और उस सेंटर ऑफ मास पे उस पॉइंट पे उसका मास स्मॉल m कॉन्सेंट्रेटेड है बाय डेफिनेशन, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दैट इज r, राइट, करेक्ट। तो बट व्हाट वी नो, अगर हमारे पास एक मास है कैपिटल M, दूसरा है स्मॉल m, डिस्टेंस है r, राइट, तो क्या होगा, कैपिटल M मास जो है स्मॉल m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब वो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है इट इज बिकॉज ऑफ मास, मतलब इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। So this acceleration of small m towards capital M is called as acceleration due to gravity. But by from Newton's second law of motion, force is nothing but mass। किसका acceleration हो रहा है? Small m का। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल M लिख देते हैं, फिर बोलते हैं कैपिटल MA इज इक्वल टू GM_m/r², फिर वो कैंसल कर देते हैं ऐसा, फिर हो गया गलत। This is wrong because we are assuming that capital M is very large than small m, so small m will be accelerated towards capital M। Simple example देता हूं, हम जब एक हाई बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो रिलीज कर देते हैं, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। उल्टा भी ट्रू है, अर्थ इज ऑल्सो गेटिंग attracted towards that object, but mass of earth is so huge as compared to that small object that that small object is accelerating towards the center of earth। तो किसका एक्सेलरेशन हो रहा है? स्मॉल m का। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल m लिखेंगे यहाँ पे। तो ये स्मॉल m गया, तो क्या बचा? a इज इक्वल टू GM/r²। इसको बोलते हो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? ओके, अब if I have an object which is very close to the surface of earth, मान लो अर्थ की सरफेस पे ही है, ऐसा मान लो, फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर एंड दैट ऑब्जेक्ट सेंटर बिकम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो फिर एक्सेलरेशन जो भी होगा उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट अर्थ सरफेस। तो इसको g से डिनोट करते हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस पे, तो मैं बोल देता हूँ g अर्थ सरफेस, और फॉर्मूला क्या था? g स्मॉल m बराबर, इफ यू रिमेंबर, स्मॉल m बाय r, लेकिन यहाँ पे r इज कैपिटल R²। ओके, राइट। तो if the object is very close to the earth surface, then small r is capital R and acceleration due to gravity is given by this, right? Okay, good। देखो मैं जानबूझ के एक चीज यहाँ पे मैंने गलत की है, सो एज टू अंडरस्टैंड। देखो क्या हो जाता है, अब अगर आपको ये g की वैल्यू फाइंड करनी है ना,
अगर आपको g की वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैपिटल G का हमको पता है 6.67 × 10⁻11। रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻7 मीटर्स, राइट। तो r पता है, स्मॉल m नहीं पता। क्या पता मून है, क्या पता स्मॉल चॉकलेट का बॉक्स है, क्या पता एक रबर का बॉल है, किसको पता एक सॉकर का बॉल है। इसका मतलब ये होता है दैट वी आर करेक्ट ओवर हियर, because mass of small object on the both sides should cancel out because we don't know which mass is getting accelerated। तो यहाँ पे कैपिटल M रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे स्मॉल m लिखा है, दिस वाज द थिंग दैट आई मेड इट इंटेंशनल, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो g की वैल्यू जो होती है स्मॉल g की, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M, एंड दैट कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अट्रैक्ट कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है, बाय आर स्क्वायर। अभी अगर आप मास ऑफ अर्थ डालोगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ डालोगे आप यहाँ पे, वैल्यू जी के लिए डालोगे, तो इट टर्न्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल टॉपिक एंड देयर इज नथिंग रियली टू लर्न, आई मीन इट्स वेरी सिंपल। मैं वापस बता देता हूँ आपको। देखो, बात ये थी कि हमारे पास ये हो गया अर्थ और ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। ओके, अर्थ का मास कैपिटल M और इसका स्मॉल m। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं दैट मास ऑफ अर्थ इज एट इट्स सेंटर। सो ऑल total mass of the earth is supposed to be concentrated at its center, assuming earth is sphere, क्योंकि sphere के लिए center of mass उसके center पे आता है। Then you have small m mass का center of mass at that point. The distance between these two points is r, small r. This is small r over here, right? So from Newton's law of gravitation or universal law of gravitation, force between these two is G capital M small m by r square, right? Assuming कि ये दोनों masses point masses है और कैपिटल मास इज m इज ग्रेटर देन स्मॉल m, तो क्या होगा कि कैपिटल M जो है वो स्मॉल m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स किस पे लग रहा है, स्मॉल m पे लग रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे m इंटू a, बिकॉज दैट इज न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। g m बाय r स्क्वायर, स्मॉल m कैंसल। तो ये जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना हमारे लिए, राइट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे होता तो स्मॉल r की जगह हम लोग लिखते हैं कैपिटल R, राइट। तो बन जाता g कैपिटल M बाय कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर मास और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो दैट बिकम्स 9.8। तो दिस इज प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल है, राइट। सो दैट्स इट। So we will note it down now. What do we know is, we know that the gravitational force of attraction, the gravitational force of attraction between, for example, between an object of mass m, between a point object, between a point object of mass small m and another
point object of mass capital M is given by, so it is given by F is equal to G M M by R square, where R is the distance between 2 point masses, where R is distance between 2 point masses, right? Similarly, using this equation, the force between the force between Earth of mass m, capital M, and an object of mass small m can be obtained by treating both of them as point masses, by treating both of them as point masses with their masses concentrated at center of mass, with their masses concentrated at the center of mass, at the centers of mass. Therefore, F is equal to Gmm by R square, where R is the distance between their centers of masses, where R is the distance between their centers, right? Mass small m will experience a gravitational pull, pull मतलब force होता है, so you can write down gravitational force as well. Let's experience a gravitational force due to Earth of mass capital M, and will be accelerated, right, using Newton's second law of motion. We have F is equal to ma. स्मॉल m क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल m का एक्सेशन हो रहा है. So from 1 and 2 what we can write down is, from 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं, from 1 and 2 ma is equal to g m m by r square. M और m गया, therefore a is equal to g m by r square, and this a is called as, known as acceleration due to gravity of the earth. Okay, so this is known as acceleration due to gravity of earth.
and is denoted by G, and is denoted by G, by small g, right? If the object is close to the Earth's surface, is close to the surface of Earth, then small r is approximately equal to capital R, right? Where capital R is radius of Earth, that is radius of Earth. Therefore, what you can write is simple. Action due to gravity G at Earth's surface, at Earth's surface is equal to capital G capital M by capital R square. Substituting the values, you get 9.8 meter per second square, right? Enough. तो इतना theory आपको पता होना चाहिए. So it is very simple. So what we have done so far is, आज हमने वेक्टर फॉर्म देखा, इजी है. Force on 2 due to 1 is from 2 to 1. Force on 1 due to 2 is from 1 to 2, क्योंकि they are attractive forces. And बाकी स्ट्रक्चर तो फॉर्मूला का सेम ही है, जी m1 m2 by r square, सिर्फ डायरेक्शन आपको देखनी होगी. Then we saw what is superposition principle. Force on one mass due to all other masses is just the vector sum of all the forces. Force on one, total force on one is force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4, and so on and so forth. Then we saw what is acceleration due to gravity. Easy है ये, बहुत simple है. Okay, now what we should be doing is we should be solving minimum one example today. Okay, so example 5.2. Just a minute. Yeah, just a minute. Okay, so in example 5.2, what we have been told is बहुत simple है. The gravitational force between two bodies is 1 Newton. If the distance between them is doubled, what will be the gravitational force between them? It is actually an oral question, but because we are into state board preparation, we cannot write down answer orally. It is 1/4 of original, क्योंकि 0.25 न्यूटन आ जाएगा, मतलब आंसर oral question है. But since we are preparing for state board, we should write things properly. So force in the first case is 1 Newton. Let us say distance between the two masses is r, right? तो पहला मास m1 है, दूसरा मास m2 है, मान लेते हैं, राइट? अभी बोला है कि डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, तो उस केस में what will be the force? So what is going to be the value of F2, ऐसा पूछा है. इसको तो प्रोपोर्शनलिटी से ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बट एज आई टोल्ड यू वी हैव टू राइट अ प्रॉपर सॉल्यूशन. So we are supposed to find out F2, right? So what formula do we need to know? We just need to know what is the formula for force, what is the formula for gravitational force. That is what we need to know. It is G m1 m2 by r square.
again, as I told you, the solution is very easy. It's damn simple. What we can write is F1 मतलब 1 Newton is G m1 m2 by r1 square, equation 1. F2 is G m1 m2 by r2 square, equation number 2. मैं करता हूं F2 by F1, तो यह आएगा आपका G m1 m2 by r2 square upon G m1 m2 by r1 square. Okay, right, तो simple है. तो what you will get from here is G m1 m2 G1 m2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा आपको r1 by r2 का स्क्वायर, राइट. और r1 by r2 हाफ है, you can see it from here, r1 by r2 is half, therefore f2 is equal to r1 by r2 square into f1, that is 1 by 2 का स्क्वायर into f1. और f1 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो मैं 1 न्यूटन डाल देता हूं, तो 1 by 4, तो 1 by 4 is nothing but 0.25 newton force. So this is the force if the distance between two masses is doubled, right. तो बहुत सिंपल है, extremely simple thing, right. Good. Then next question, if I take, it is little big, so I would like to stop here and we will continue in the next session.